So, what do you mean by stylistics, and what are the nature and goals of stylistics? What does the word basically means, stylistics? So, welcome back and assalamu alaikum. My name is Hera, and today in this video we'll talk about the word stylistics, the basic meaning, the definition of it, and the majorly we'll be talking about the approaches of stylistics. So, let's begin with it. Things which we would be discussing in this video are the introduction, definition, nature and goals of stylistics, and then going on with the approaches of stylistics such as style as a man, style as a choice, style as a conformity, style as a derivation, style as a period or time, and style as a situation lastly. So let's begin with it. So it has been said that the word stylistics, or the basic word stylistics, the literal meaning of this word is that it has been derived from the word style and linguistics. So when we combine the style and linguistics, we get stylistics. The word style means कि ये एक language habit है of particularly one person, because every person is having his or her style in their unique way. जैसे कि शेक्सपियर ने उसका एक अपना स्टाइल था, जेम्स जॉयस का अपना था, हेमिंगवे का अपना था. इसमें एक यूनिकनेस होती है हर एक इंसान के स्टाइल में. Now, another way of discussing style is that the language habit shared by a group at a time or at one time. For example, the poets of the Augustan age or the poets of the 18th century, or talking about the poetry of the old English literature, the heroic poetry that they used to write was always different from each time. तो हर एक एरा के राइटर्स दूसरे एरा से डिफरेंटली राइट करते थे कुछ भी लिटरी स्टफ, इसलिए उनका स्टाइल टोटली चेंज होता था. Similarly, style is known as the manner of expression, and a style is a way of writing anything in a clear and refined manner. Now, let's talk about that stylistics is basically a branch of linguistics that deals with the linguistic rules on literature or any piece of literature. हम लोग एक लिटरी पीस को लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इट कैन बी अ स्पीच और इट कैन बी अ पोम or even a prose. So we can apply all the linguistic rules on a literature and can derive the conclusion of it. So simply we can say that a branch of applied linguistics that is concerned with the application of linguistic rules on literature. And then we can even say that stylistics is the scientific study of the style that determines how readers meet in the language of mainly literature or literary text in order to explain how one understands and is affected by the text while reading them. अब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक द शॉर्ट स्टोरी द नाइटिंगेल एंड द रोज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, अब वो जिस तरीके से लिखी गई है, अगर उस पर हम लोग स्टाइलिस्टिक्स अप्लाई करें तो it will make you people understand how it has been written with so much emotions, and how it has been emphasized in a particular way, how the effects of the society have been explained. So that would enlighten the readers how the Nightingale and the Rose, the short story written by Oscar Wilde, has been written in such a particular way. One of the particular goal of the stylistics is that to improve the style of the writer, is that the goal of the stylistician is to judge the reader's ability in expressing their ideas for a particular literary piece. Word goal even means the aim of stylistics. So stylistics examines the creativity in the use of a language. It enhances the way we think about a language and its issues. Thus, the stylistic process examining the creativity of a language use develops our understanding of literature. The purpose of stylistics is to connect linguistic analysis with literary criticism. जो बेसिक पर्पस है स्टाइलिस्टिक्स का, तो इसका ये मतलब है टू कनेक्ट लिंग्विस्टिक एनालिसिस विद लिटरेचर क्रिटिसिज्म. ठीक है, हमने एक पीस ऑफ लिटरेचर लिया, उस पर हम लोग लिंग्विस्टिक रूल्स अप्लाई करते हैं. लिंग्विस्टिक्स रूल्स क्या है? टॉकिंग अबाउट syntactic rules on literature, or we can even say that how a sentence is formed.
why a particular sentence is formed rather than questioning that what it is written. We go with the statements of how and why instead of what. So the basic goal of stylistics is to describe the formal features of the text in order to show their functional significance for the interpretation of the text. वो सारे stylistics के features जब हम literature पे apply करते हैं तो हम लोग we figure out the basic interpretation of the text, how the text was written, in what manner was it written, why it was written, and how it has been formed. तो हम जब एनालाइज करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर लिटरेरी पीस को तो हम ऑथर के स्टाइल को एनालाइज करते हैं, द वे द ग्रामर हैज़ बीन यूज, द लेक्सिस, द सेमेंटिक्स एंड एज वेल एज द फोनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द डिस्कर्सिव डिवाइसेस दैट हैज़ बीन यूज्ड टू अ पर्टिकुलर in a certain text in a particular context. तो हम जब ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं तो these are the goals of stylistics. The nature of stylistics is that it enhances our appreciation and enjoyment of literature. We do have few approaches in the nature of stylistics, that are style as a man, style as a choice, style as a deviation, style as a conformity, style as a time or a period, and style as a situation. All of these styles are incorporated in the nature of stylistics because we need to attain the better understanding of the text. So the concept of style is based upon the use of language in different ways, all for the purpose of achieving a common goal is to negotiate the different meanings that have been derived from the interpretation. अच्छा, अब जैसे कि स्टाइल ऑफ अ मैन हम डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज और हर ओन यूनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और दो बंदों का एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर कभी भी नहीं होता. सो देयर आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स दैट डिस्टिंग्विशेस वन पर्सन फ्रॉम अनदर. अब एक इंसान का पर्सपेक्टिव या स्टाइल चेंज होगा बिकॉज ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड. दूसरे इंसान का कुछ उसकी राइटिंग्स में रिलीजियस इंक्लिनेशंस होंगी, एंड इवन एज वेल एज कल्चर, एजुकेशन, जोग्राफिकल लोकेशंस भी उस पर इम्प्लीमेंट कर सकती हैं. Therefore, we say that writers have different personalities. Talking about another style which is the style as a choice. तो style as a choice में आप लोगों के पास different linguistic elements होते हैं, जैसे कि different words होते हैं. We do talk about here the syntagmatic and the paradigmatic relationship between the words. पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे होता है, और पैराडिग्मेट और सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप दैट इज़ ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो पैराडिग्मेटिक एक्सिस पे आप लोगों ने एक पर्टिकुलर word choose करना है that is suitable for a particular context. We have 4 words, for example start, commerce, go and proceed. Now we are having 4 different words, but we need to use one particular word that is suitable or applicable for a particular context. Now in the syntagmatic relationship of a sentence, if we replace the words in a sentence, so the meaning of the sentence would change totally. हम अगर पैराडिग्मेटिक में चेंज करते हैं, whether we replace from lying to sitting or sitting to lying, it won't create a big difference. But if we say that the dog is sitting on the rug and we replace it with the lying is dog on the rug, so definitely the whole sentence has been deformed and the meaning of the basic sentence has been distorted. Therefore, it is crucial to choose a word that there is appropriate for the context. This was all about the choice as style as choice. Going on with the style as conformity. Style as a conformity में ये है कि you people need to write a particular thing, but you people are enforced to follow those particular rules. जैसे कि हम लोग कोई research paper लिखते हैं या thesis लिखते हैं तो we need to write it in a particular order. उसकी वजह से हमारा जो जितनी भी creativity है it kills away or it dies out. स्टाइल एज अ कन्फर्मिटी एंड स्टाइल एज अ डिविएशन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं. जैसे कि इफ़ वी टेक 2 एग्जांपल्स, one example, in that example we have 2 things like crayon and a pencil. Now if we say that a pencil is not colorful enough, and if we say that a crayon is not sharp enough, so we are creating a line between it and we are killing the creativity. One major weakness of conformity is to establish style, and it clips creativity. This was the
of the weakness of the conformity. अच्छा, स्टाइल एज ए डिविएशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो डिविएशन का मतलब जो बेसिक मतलब है टू डिविएट फ्रॉम द पाथ। एक आपको एक पाथ मिला हुआ एंड यू डू नॉट फॉलो दैट, सो इट डेफिनेटली मीन्स you are deviating from it. So whenever we are writing a research paper or any academic writing, we need to follow the graphological connections, the syntactic rules, and the lexiosemantic properties, or even the phonological. So if we deviate from it, like हम अगर एक topic है उसको full capital bold letters में लिखते हैं upper case letters में, so it definitely we are creating a graphological mistake. हम लोग स्टाइल एज ए डेविएशन से को फॉलो कर रहे हैं एंड वी डू कम अंडर इट। इस तरह हमारे पास एक राइटर है ई कमिंग, वो अपना नाम सारा स्मॉल लेटर्स में लिखता था जिसके ऊपर उस पर टेक्स्ट भी लगता था, सो इट इज़ द स्टाइल एज अ डेविएशन ही यूज्ड टू फॉलो। द सेकेंड लास्ट अप्रोच इज़ दैट स्टाइल एज अ टाइम और अ पीरियड। अब हर टाइम पीरियड में या हर एरा में इंग्लिश लिटरेचर के हमारे पास डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट जॉनराज और डिफरेंट सोसाइटी प्रेजेंट थी। तो इसी तरह जब हम लोग ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं उस टाइम पे सिनेरियोस डिफरेंट थे। ऑथर्स की जो राइटिंग है बेसिक इंग्लिश वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, और आजकल की इंग्लिश जो कि मर्ज हो गई है डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो स्टाइल एज अ पीरियड और टाइम, उस टाइम की इंग्लिश और आजकल की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसकी सेंटेक्स, वोकेबलरी, स्पेलिंग्स, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो स्टाइल एज अ टाइम एंड अ पीरियड इज़ दैट अ लैंग्वेज इज़ डायनामिक, इट्स नॉट स्टैटिक। तो हर एक एरा के हर एक लैंग्वेज में, चाहे वो फ्रेंच है, इंग्लिश है, लैटिन था, जो भी था, एवरी लैंग्वेज हैज़ बीन चेंज्ड नाउ। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं इंग्लिश में, डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स एंड सिंक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। तो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स का मतलब है द लैंग्वेज वी हैव स्टडीड इन द पास्ट और इन द हिस्ट्री, एंड सिंक्रॉनिक मीन्स द लैंग्वेज विच वी आर स्टडिंग in this time period known as the contemporary language. So this is the main difference between the style as a period and style as a time. So the last approach is that style as a situation. तो हर situation के हिसाब से हम लोग particular words choose करते हैं, whether it's formal or informal. इसी तरह हमारे पास एक लिंग्विस्ट है माइकल हेलिडे, उसने रजिस्टर का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उसने बताया था कि हर एक सिचुएशन में, जैसे कि क्लासरूम का सिचुएशन है तो उसमें हम लोग किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, कौन सा मीडियम होगा, जैसे कि द लैंग्वेजेस यूज्ड इन द कोर्ट रूम और इन क्लासरूम और द लैंग्वेज यूज्ड informally at home. So these are the different situations that has been enlisted, and consequently a given situation has a great influence on the choice made at every level of language description. So every situation has a different description of it, how we need to use a particular language in a particular context. So this was all about my course, and thank you so much for watching it. This video has been a requested video, so I request you all to like and subscribe my video and channel, and you'll be even watching a lot more about videos about linguistics and literature. I would be enlisting all the links in my description box below about anything related to the term stylistics. I'll meet you guys in the next video. Till then, Allah Hafiz and take care.